Hello everyone. Our topic for this lecture is connection oriented service. As I told you, transport layer provides connection oriented as well as connection less services. Now we are going to discuss connection oriented services. This is the mechanism of connection establishment. How the connection is set up between two hosts on the network. This is host A and this is host B, and there is a connection between these two, a dedicated connection. Connection oriented itself means that there is a dedicated channel or dedicated link between the hosts on the network. Now dedicated means point to point. This channel, this is serving host A and host B. So in this connection establishment mechanism, host A, suppose host A is the sender and host B is the receiver. Or you can simply say this is host A and this is host B and they want to share some data. Host A is initiating and it has sent a connection request message to B. When host A is sending a connection request message to B, it will send the information about the traffic from A to B. Okay? Along with the connection request, it will tell host B about the traffic from A to B. Then after successfully receiving this connection request, this host B will send an acknowledgement, and this acknowledgement is an indication that B has received the connection request message from A. Now B will send a connection request message to A, and in this message B will send its traffic इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू ए कि बी से लेकर ए तक के पाथ में ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन वो उस मैसेज के अंदर इनकैप्सुलेट कर देगी. नाउ आफ्टर रिसीविंग दिस कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम बी टू ए, इट विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट दैट होस्ट ए हैज़ रिसीव्ड एंड देन द कनेक्शन इज established. Okay, see, connection establishment, this is looking that this establishing a connection is a very simpler process, but practically it is not a simpler job, it is a very tricky job. See, this is 3 scenarios of connection establishment, and this is three-way handshaking. Three-way handshaking means, suppose there are 2 persons, one is raising a hand for handshaking and second is giving his hand as an acknowledgement, and when both people are greeting each other, this is an indication that they mutually decided to establish the connection. So three-way handshaking in terms of network would be, if host A is asking to set up a connection with host B, then it will send a connection request message to host B, and then host B, if it is ready, it will send an acknowledgement back to host A. Then host A will again send an acknowledgement, or it will send a data to B. This is three-way handshaking. Okay, see, this is the normal operation of three-way handshaking. There is a host 1 and host 2. Host 1 is sending a CR. CR means connection request. CR stands for connection request. Connection request message with sequence number X. Every request message or every reply message, every packet that is being transmitted on the network is having a sequence number. Now host 1 is sending a connection request message with the sequence number X to host 2. Host 2, after receiving this message, this connection request message, it will send an acknowledgement with sequence number Y, and acknowledgement is equals to X. Now what is this acknowledgement? This is an acknowledgement. ACK indicates acknowledgement. So with sequence number Y, ACKX. ACKX means this is an acknowledgement for the connection request message with sequence number X. ये जो connection request message आई थी जिसका sequence number X था, B ने उसका acknowledgement host 1 को भेजा है. Fine, and this sequence is equals to Y. This stands for, now this host 2, this is expecting the host 1 to send a message or a packet with sequence number Y. Then after successful reception of this acknowledgement, now host 1 will send a data to host 2 with sequence number, say Z.
and this is an acknowledgement for this y. Okay, clear? Now this is the normal operation. When host 1 is sending some message to host 2, host is successfully receiving, host 2 is sending back acknowledgements, then host 1 is sharing the data. This is normal operation. But practically what happens, sometimes this connection request message losses over the network. It gets lost over the network due to congestion or due to some internal problems in the network, or the acknowledgement may also get lost. So these are the two abnormal situations, abnormal circumstances of this three-way handshaking method. See, there is a host 1, host 2. Host 1 has not transmitted anything, but host 2 is receiving a old duplicate packet with connection request sequence is equals to x. That means host 2 के पास क्या है, एक पैकेट आया जो होस्ट 1 ने सेंड नहीं किया था. ये कोई पहले का जो पैकेट होगा जो नेटवर्क पे उस टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ होगा, और ये कुछ टाइम बाद आके उसको मिल रहा है होस्ट 2 को, बट होस्ट 1 ने ये सेंड ही नहीं किया है. ओल्ड डुप्लीकेट पैकेट विद कनेक्शन रिक्वेस्ट हैविंग सीक्वेंस नंबर x. आफ्टर रिसीविंग दिस, द होस्ट 2 इज सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट टू host 1 that it is now expecting a packet with sequence number y, and this is an acknowledgement for this connection request x. But host 1 has not transmitted this, so host 1 will reject this connection request. ओके जब होस्ट 1 ने भेजी ही नहीं रिक्वेस्ट, तो उसने क्या करा, जब इसके पास एक्नॉलेजमेंट आया तो उसने क्या बोला, उसने रिजेक्ट कर दिया इस कनेक्शन रिक्वेस्ट को. ओके, नाउ सेकेंड केस में क्या हुआ, अगेन दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ दिस. यहाँ पर क्या हुआ, एक ओल्ड डुप्लीकेट पैकेट जो पहले से ही नेटवर्क पे फ्लोट कर रहा होगा, होस्ट 1 ने ट्रांसमिट नहीं किया, ये पहले से ही नेटवर्क पे फ्लोट कर रहा था. दिस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय होस्ट 2. Now host 2 is sending an acknowledgement to host 1 that now it is expecting host 1 to send packets of sequence number 1. But what happened, ये acknowledgement उसको मिला, लेकिन क्या हुआ, इतने में एक और कोई डेटा आ गया विद सीक्वेंस नंबर x. उसको चाहिए था सीक्वेंस नंबर y, और यहाँ पर रिसीव कौन सा हुआ, सीक्वेंस नंबर x. तो दैट इज समथिंग इज रॉन्ग. इट इज एक्सपेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट में उसने क्या भेजा, x का एक्नॉलेजमेंट भेजा, और उसने बोला कि नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग होस्ट 1 टू सेंड डेटा विद सीक्वेंस नंबर y, बट उसको रिसीव कौन सा हुआ, विद सीक्वेंस नंबर x, और ये भी होस्ट 1 ने सेंड नहीं करा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई. तो इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा इस सीक्वेंस को जो इसने मांगा था. इसने बोला होस्ट 2 ने दैट इट इज एक्सपेक्टिंग होस्ट 1 टू सेंड अ पैकेट विद सीक्वेंस नंबर y, बट इसने तो ये भी नहीं भेजा था, इसने तो विद सीक्वेंस नंबर x भी नहीं भेजा जिसका इसको एक्नॉलेजमेंट मिला है. तो उसने क्या करा, उसने आइडेंटिफाई किया ट्रांसपोर्ट लेयर ने दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, दिस इज एरर कंट्रोल. ठीक है, एरर डिटेक्ट हुई तो उसने क्या किया, एक रिजेक्ट मैसेज भेज दिया उसको दैट कनेक्शन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. ओके, सो दिस इज थ्री-वे हैंडशेकिंग इन connection establishment. Now let's move to connection release. See, connection release. Host 1, host 2. Host 1 has sent a connection release request message to host 2. Host 2 is sending an acknowledgement that yes, it is ready. When it is ready, it is also sending a connection release request message to 1. And when both the sender and the receiver, host 1 and host 2, they both are agreeing to terminate the connection, to release the connection, so it is sending an acknowledgement and connection will be released. Host 1 ने बोला that now connection should be released. Host 2 ने agree किया, और दोनों के बीच में म्यूचुअली क्या हुआ, डिसाइड हुआ कनेक्शन रिलीज करने के लिए, और तब कहीं जाके कनेक्शन रिलीज हुआ. बट क्या होता है, this connection release, this is of two types, asymmetric and symmetric. Asymmetric release means जहाँ पर sender abruptly connection को release कर देता है. connection release. See, जब connection release होना होता है तो it should be mutual, it should be two ways, both the parties should agree to release the connection. but इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर asymmetric release में क्या होता है कि ड्यू टू सम इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन इन द नेटवर्क, जो सेंडर है उसने अब्रप्टली मीन सडनली कनेक्शन को रिलीज़ कर दिया. उस केस में क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा. क्यों,
हो सकता है कि जो भी डेटा सेंटर से होकर गया हो वो रिसीवर साइड तक पहुंचा भी ना हो और उससे पहले ही उसने कनेक्शन क्या रिलीज़ कर दिया। अब कनेक्शन रिलीज़ हो गया, दैट मीन्स पैकेट्स लॉस हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, पैकेट्स बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। एंड देयर इज अनदर रिलीज, दैट इज सिमेट्रिक रिलीज। इन सिमेट्रिक रिलीज both the parties agrees together, they mutually decide to release the connection and there is no packets loss, no packet loss is there, but here packet loss is there, okay, क्योंकि यहाँ पे abrupt कनेक्शन रिलीज हुआ था, यहाँ पर म्यूचुअली डिसाइड करके किया है। फाइन, नाउ we have this two army problem. This is a practical problem related to connection establishment and connection release, and this is important for 2 marks questions for your semester examination point of view. What is this? There are two armies, blue army and white army. Blue army has 2 plus 2, 4 commanders. White army has 3 commanders. Now there is a this white army, this is there in the valley, ये वैली में है, ठीक है। एंड हिल साइड पर ब्लू आर्मी ने अपने 2 पार्ट्स किए हुए हैं, कुछ मेंबर्स ब्लू हिल साइड इस तरफ है और कुछ लोग वैली के इस तरफ हैं। नाउ द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट what exactly is the way that blue army, if they both attack each other, तो ऐसा क्या होगा, ऐसा कब पॉसिबल है कि ब्लू आर्मी वाइट आर्मी से जीत जाएगी। ओके, सो सी blue army has 4 commanders and white army has 3. if they together in blue army 1 और blue army 2, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। द ओनली वे दे कैन कम्युनिकेट इज, अगर ब्लू आर्मी 1 को ब्लू आर्मी 2 से कम्युनिकेट करना है तो इट हैज़ टू सेंड 1 कमांडर टू दैट हिल साइड। कोई मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, दे कैन ओनली कम्युनिकेट वाया देयर मैसेंजर्स ओनली। ओके, सो आई एम सेइंग दिस टू आर्मी प्रॉब्लम स्टेट्स दैट कि अगर ब्लू आर्मी को वाइट आर्मी से जीतना है तो क्या होगा, ब्लू आर्मी विल सेंड अ, द चीफ ऑफ ब्लू आर्मी विल सेंड अ कमांडर और मैसेंजर टू ब्लू आर्मी 2। क्यों? अगर ये ब्लू आर्मी 1 और ब्लू आर्मी 2 दोनों एक ही टाइम पे अटैक करते हैं देन ओनली दे कैन विन, बिकॉज नंबर में वाइट आर्मी ज़्यादा है। बट अगर ब्लू आर्मी 1 अकेले या ब्लू आर्मी 2 अकेले वाइट आर्मी पर अटैक करते हैं तो उनके लॉस, बैटल को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये दोनों एक साथ मिलके अटैक करते हैं तो दे विल कॉन्कर दिस वैली एरिया। ओके, so if they want to achieve this, if they want to win the battle, what they have to do, blue army 1, the chief of blue army 1 will send a messenger to blue army 2, then blue army 2, when chief of blue army 1 will send a commander stating that will attack tomorrow at 1 PM। ठीक है, यहाँ पर चीफ ऑफ ब्लू आर्मी 1 ने क्या किया, एक मैसेंजर भेज दिया ब्लू आर्मी 2 के पास दैट दे बोथ विल अटैक एट 1 PM टुमारो। बट क्या होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि जब मैसेंजर फ्रॉम ब्लू आर्मी 1 इज़ गोइंग टू ब्लू आर्मी 2, वो जाएगा तो वैली से होकर ही, इट माइट बी पॉसिबल कि वाइट आर्मी उसको कैप्चर कर ले और उसको किल कर दे। तो उस केस में क्या होगा, मैसेज उन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये क्या हुआ, जब कनेक्शन, दिस इज़ जस्ट लाइक अ कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, उसने कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए क्या भेजा, एक मैसेज भेजा तो था बट वो लॉस हो गया। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी और है, व्हेन चीफ ऑफ ब्लू आर्मी 1 इज सेंडिंग 1 मैसेंजर टू चीफ ऑफ ब्लू आर्मी 2 दैट दे विल बी अटैकिंग एट 1 PM टुमारो, तो क्या होगा, हो सकता है ये मैसेज ब्लू आर्मी 2 को मिल तो जाए, लेकिन जब ये एक्नॉलेजमेंट वापस भेजें तो एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकता है। ठीक है, सो टू आर्मी प्रॉब्लम स्टेट्स दैट कि देयर इज नो पॉसिबल सोल्यूशन, ना ही 2 वे हैंडशेकिंग, ना ही 3 वे हैंडशेकिंग, ना ही 4 वे हैंडशेकिंग, कोई भी n वे हैंडशेकिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, बिकॉज एट अ टाइम, किसी भी टाइम पर हो सकता है या तो मैसेज लॉस हो जाए या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए। ओके, सो देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट। अगर ऐसा होना है
तो आइडियली यही अज्यूम किया जाएगा कि जब इसने ब्लू आर्मी 1 ने मैसेज भेजा है ब्लू आर्मी 2 को, तो ब्लू आर्मी 2 ने वो रिसीव भी कर लिया एंड ब्लू आर्मी 2 ने उसको एक्नॉलेजमेंट जब सेंड किया ब्लू आर्मी 1 को दोबारा से, तो वो भी सक्सेसफुली रिसीव हो गया। सिर्फ इसी केस में ये दोनों अटैक कर पाएंगे, लेकिन अगर इनके बीच का मैसेजेस लॉस हो गए या एक्नॉलेजमेंट्स लॉस हो गए तो ये पॉसिबल नहीं है कि ब्लू आर्मी 1 वाइट आर्मी से बैटल जीत जाए। सो practically there is no possible solution for this problem, but ideally it is three-way handshaking. Through three-way handshaking this problem can be solved, but practically three-way handshaking does not guarantee, because packets may get lost, acknowledgements may get lost. Okay, so this was connection release mechanism. Now let's move to TCP segment header. As I told you that there are two protocols that are working on transport layer. One is TCP, another one is UDP. Now we are discussing TCP protocols. TCP protocols means TCP segment header means transport layer पे जो data unit travel करती है उसका structure. The structure of the packet that is transmitted or that is shared on the transport layer of the host. ठीक है? See. The first field of the TCP segment headers. Broadly, this TCP segment, this is divided into two parts. A header and payload. Payload, or you can say data. Okay, this header, this is of 20 bytes. And payload, this is of 655, not 655 exactly. 65495 bytes. The header, this is also followed by a 20 bytes optional header. Optional header. So 20 plus 20 plus 65495. Okay, this is the size of TCP segment or TCP packet. Okay, the first field of TCP segment is source port. 32 bits. Of the 32 bits, the source port, this is of 16 bits. This field, this is of 16 bits. And this 16-bit number represents the port number of the source. Port number of the source means the port address of the process, the address that is running on the host machine, the address of that process that is executing on the host machine. Okay, this is source port and this is a 16-bit number. Then the next field is destination port. Destination port, this is also 16-bit number, and this 16-bit number, this is actually the port address of the process that is executing on the destination host. Fine. Now next is sequence number. This sequence number, this is a 32-bit number, and this 32-bit number, this basically represents, or this basically tells the sequence number of the TCP segment. I told you that packetizing is one of the duty of transport layer. Packetizing means to convert a larger message into smaller packets, and जब स्मॉलर पैकेट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है तो रीअसेंबली के लिए देयर शुड बी अ मैकेनिज्म. हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट के बाद कौन सा सेगमेंट आएगा. तो टू आइडेंटिफाई और टू फॉर रीअसेंबलिंग प्रोसेस वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर, एंड दिस इज अ 32-bit नंबर. फाइन. नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर. दिस इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स, and this is also a 32-bit number. Clear? Then we have TCP header length. TCP header length. What is this? This is a 4-bit field. This is a 4-bit field that tells the
length of the header. I said that the length of header is 20 bytes and this is followed by 20 bytes optional header. This optional header, this 20 bytes of information, this is optional. So this TCP header length, this tells the actual length of the TCP header, whether it is 20 bytes or it is 20 plus 20 bytes, okay, or less than 40 bytes. Clear? Now after TCP header length, we have a field that is reserved. This is a 6-bit field and this is reserved for future use. इसका कोई use नहीं है TCP segment में. Fine. Then next we have flags. Now there are 6 flags of TCP segment header. First is urgent pointer, URG. This is represented by URG. If this is set, that means the data that is there in the TCP segment header is of higher priority, is of highest priority, and this needs to be served first. The connection request that is there in this TCP segment, TCP packet, is of utmost priority and this should be served first. Fine. Now second is acknowledgement. If this is set, this indicates that the TCP segment that is coming is a acknowledgement packet. This is not a data packet, okay? And for acknowledgements, this optional part, this data part, the data part of acknowledgement is always 0. Data part contains no value, okay? Now third is PSH, push function. What is this? If this is set, then receiver should deliver this segment to the application program. अगर push function set है तभी क्या होगा? Receiver अपना reply source को वापस send कर सकता है, otherwise not. Next is reset, RST. This is a flag of TCP segment that is used to reset the connection. Reset the connection means जितने पहले भी connections होंगे वो सारे release हो जाएंगे और एक दोबारा से connection establish होगा. Fine. Now next is SYN and then FIN. SYN stands for synchronize and FIN indicates no more data from sender. SYN, when SYN flag is set, this means अभी सेंडर साइड से पैकेट्स आ रहे हैं. अगर रिसीवर पे कोई पैकेट रिसीव हुआ है और SYN फ्लैग क्या है, सेट है, तो उसका मतलब है कि देर आर सम मोर पैकेट्स दैट द सेंडर विल ट्रांसमिट. ओके. नाउ व्हाट इज FIN? FIN मीन्स if the receiver is receiving a packet or any host is receiving a TCP packet that contains FIN flag as set, that indicates that data has successfully transmitted. This is the last byte of data from the host. और अब इसके बाद कोई और डेटा, कोई और स्ट्रीम ऑफ बिट्स या बाइट्स शेयर नहीं होंगी. दिस इज द लास्ट पैकेट, लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ द डेटा. क्लियर? नाउ after this there is window. Window means this is basically for flow control and window means the capability, or you can say this is a 16-bit number for flow control that tells the sender how much data the receiver is willing to accept. receiver की capacity कितने data को एक attempt में receive करने की है. Fine. Now next is checksum. Checksum, this is same as in data link layer and this is used for error control mechanism. Next we have urgent pointer. If this pointer, this is a 16-bit number again, and this 16-bit number itself states that the TCP connection request that is coming with this TCP segment is of utmost priority and this needs to be served first. Okay. और इसी urgent pointer के लिए we have this urgent flag.
Fine. Now next we have options. And here we have padding, and last is data, and this data, this is optional. See, I said that TCP segment is equals to header plus data. Okay, header is of 20 bytes, and it might be possible that there may be an optional header of 20 bytes, and data is of 65495 bytes. So TCP header up to this urgent pointer, this is a TCP header. If 20 bytes optional header is there, then this option field, this represents the size of this optional header कि 20 bytes में से optional header ने कितना acquire किया हुआ है. This is represents the size of the optional header. And what is padding? Padding means कि in case 20 bytes are reserved for header and remaining 20 bytes for optional header. अब इन 20 bytes में से जितना भी bytes हमारे यूज़ हुए होंगे, जितनी ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसका साइज़ बताएगी. बट इट माइट बी पॉसिबल कि 20, ज़रूरी नहीं है कि पूरे 20 बाइट्स हों. 20 बाइट्स में से वो 10 बाइट्स भी ले सकता है, 15 भी ले सकता है, 17 भी ले सकता है. तो जितने बिट्स रिमेनिंग बचेंगे उनमें क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो करना पड़ेगा, ज़ीरो पैड करना पड़ेगा. सो दिस इज़ पैडिंग. फाइन. तो कितने बिट्स पैड होंगे, दैट इज़ दैट दिस फील्ड, पैडिंग फील्ड रिप्रेजेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज डेटा, and the size of data is 65495 bytes, and this data is optional. Why this is optional? Because if this is a acknowledgement packet, then this data is 0. If this is a connection request message or this is a data, then this field is there. But acknowledgement में ये portion नहीं होगा. This is 0. Okay? That's it. Thank you.